Hello, class 4th, you all are welcome back again in your EVS class. In today's class, we are going to study another new very interesting chapter number 10, weather, air and water. इस chapter में बच्चों हम weather के बारे में, मौसम के बारे में पढ़ेंगे, air, वायु और जल के बारे में पढ़ेंगे. The change in sun cause weather and seasons. Now, air and its components, water and its various forms, impurities in water, ये हमारे learning points हैं. Weather क्या है? Weather is the physical state of the atmosphere, a given time described in terms of air, clouds, air pressure, humidity, rain and sunshine of a place. ये क्या करता है बच्चों? It keeps on changing every day and the change of weather occurs due to the sun. Here you can see we have sunny day, a rainy day, we have snowy day, we have windy day and we have beautiful and pleasant day जब हवा बह रही है. So बच्चों आप देख सकते हो ये क्या है? ये weather में changes हो रही है. Sun and the changes in weather and seasons. Sun की वजह से बच्चों seasons और weathers में change होता है. Sun cause changes in the weather and the seasons because इसकी जो heat है that earth unevenly इसकी जो हीट है पृथ्वी पे unevenly distributed है. This happened because the earth is continuously revolving around the sun in a fixed orbit. Now this motion is called revolution. Revolving के time the part of the earth near to the sun has warmer and longer days, so it is summer in this part. Now the part of earth away from the sun has colder or shorter days and there is winter in this part. So revolution causes changes in season. ठीक है बच्चों, अब आप ये देख सकते हैं ये पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, इसके कारण बच्चों सीजन जो है वो चेंज होते रहते हैं. द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो. अब बच्चों इट ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ वाटर कॉजिंग द चेंज इन वेदर. चलिए पढ़ते हैं. सन बच्चों सन की वजह से विंड आती है. क्यों? सन हीट करता है बच्चों एयर को नियर द लैंड. अब जो हॉट एयर है वो स्प्रेड हो जाती है और लाइटर हो जाती है एंड द लाइट हॉट एयर जो है वो जब एयर गर्म होती है हॉट होती है तो ऊपर राइज हो जाती है. कूलर एयर फ्लोज डाउन टू टेक इट्स प्लेस एंड दिस cooler air flowing in is called the wind. So the sun causes the wind to blow and the sun also changes the state of water and causes humidity and rain. Here we have revolution of the earth around the sun. Now humidity क्या होती है बच्चों? उमस क्या होती है? ये देखिए sun causes wind है. ठीक है, अब जो cool air है वो क्या होगी? Cool air moves in as a wind. The amount of water vapor बच्चों जो एयर में रहता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. When it is hot हमें बच्चों बहुत ज्यादा पसीना आता है. सो आपका जो स्वेट है वो इवेपोरेट होता है और आपको ठंडक महसूस होती है. और जब एयर ह्यूमिड होती है बच्चों देयर इज टू मच ऑलरेडी इन द एयर, तो आपका जो पसीना है वो इवेपोरेट नहीं होता, तब आपको स्टिकी और चिपचिपा अनकंफर्टेबल लगता है. फैक्ट क्या है? एयर फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ. इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, वायुमंडल हमारे अर्थ के चारों ओर एयर जो है वो बना लेती है. एयर मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. ये कंटेन करती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड द अदर कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. Now a blanket of air around the earth is called atmosphere. बच्चों जब एयर मूव करती है it is called wind and strong wind को हम गेल बोलते हैं. विंड बच्चों जो बहुत जेंटली और लाइटली मूव करती है उसे हम ब्रीज बोलते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड को हम विंड स्टॉर्म बोलते हैं. बच्चों जब स्ट्रॉन्ग होता है तब लाइटनिंग और थंडर भी आता है, उसे हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं. ये कितने बच्चों डिफरेंट वेरिएंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा. Activity is given to you, so you have to perform the activity. ये देखिए बच्चों आपको सैंड लेना है, थर्मोमीटर लेना है, वाटर लेना है, थर्मोमीटर लेना है. Now what you will see after measuring the temperature, place both the bowls in an open space where they get equal sunlight. After some time, note the temperature again. You have to calculate the difference in temperature. Now you have to place both the bowls inside a room. After some time, you note out the temperature again. आप बच्चों temperature बताइए कि क्या है. We conclude from the table क्या? Sand जो है that absorb or loses heat faster than water. Water absorb or loses heat slower than sand. Sea breeze क्या होती है बच्चों? The sound warms both the land and the water, but जो land है that warm up faster than water. Or in the day the sea is cool and the land is warm and hot air above the land rises and cool air of the sea blows toward the land take its place. Okay, now here you can see land breeze is there and here we have sea breeze. लैंड ब्रीज क्या होती है बच्चों? जब कोस्टल ब्रीज जो है दैट ब्लोइंग फ्रॉम लैंड जब वो उसके सी की तरफ जाती है तब लैंड ब्रीज होती है और रात में लैंड जो है वो ठंडी हो जाती है और सी जो है वो वार्म हो जाती है. अब द हॉट एयर ऑफ द सी
that rises and the cool air above the land rushes to take its place. Now breeze blows from land to sea. Breeze जो है वो land के से sea की तरफ वो blow करती है. Question है बच्चों, you have to find out क्या होगा अगर एयर नहीं रहेगी. अगर एयर नहीं रहेगी तो कोई भी लिविंग बीइंग्स भी नहीं रहेंगे. देन वी हैव वाटर. हम सभी को पता है वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ और इट इज फाउंड इन ओशन, सी, रिवर, अंडर द ग्राउंड, on mountains, in air, even our body. In fact, बच्चों 7 out of 10 parts of our body weight is of water. Now water it can change its form and exists in all 3 states on the earth. Water बच्चों वो है अपना state जो है वो change करता रहता है. Next we have evaporation. When a liquid is heated or its temperature is increased, it changes into gas. Now this process is called evaporation. If the heating is slow and it is called boiling. If the heating is fast. Okay. Now condensation क्या होता है बच्चों, जब पानी जो है when the water vapor is cool, जब वाटर वेपर जो है जो भाप है वो ठंडी हो जाती है वो पानी में बदल जाती है, इस चेंज को हम कंडेंसेशन कहते हैं. ये रिवर्स है ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में भाप उड़ जाती है और कंडेंसेशन में भाप फिर से लिक्विड में बन जाती है. नेचर में द वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू वाटर इन मेनी वेज. क्लाउड्स, ड्यू एंड स्नो ये एग्जांपल है कंडेंसेशन के. क्लाउड्स बच्चों दे आर फॉर्म्ड when water vapors condense into tiny water droplets and bigger water droplets make rain. Then we have hail. So sometimes raindrop grow in size and are then frozen to form hard balls of ice, जिसे हम बच्चों hail stone और hail बोलते हैं. Snow क्या है? When water vapor freeze in the air, it forms crystal of ice called snow. Now snowfall take place mainly on hill station in winter. Dew क्या है? When water vapor condenses on cold object like grass in the fields, dew is formed. Next we have forest. When the nights are very cold, dew can freeze to form ice and this is called frost. ये सब बच्चों फॉर्म है पानी के, देख लीजिए आप. Now fog क्या है? Fog बच्चों मतलब ओस. ठंडी में आपने ओस देखी होगी. During winter, water vapor condensation on dust particle present in the air very close on the ground to form a thick cloud, जिसे हम fog बोलते हैं. बच्चों पानी में कैसी कैसी impurities होती है? The water in well, rivers and lake is not pure due to the presence of impurities. Impurities can be number 1 soluble impurities which can not be seen like salt etc. Insoluble impurities which can be seen like sticks, mud, stones and sand etc. बच्चों इसमें germs भी हो सकता है. So insoluble impurities जो पानी में है it can be separated by any of the following method. कौन कौन सा है? Sedimentation. इसमें क्या होगा बच्चों, इस प्रोसेस में सेटल हो जाएगी जो impurity है वो नीचे सेटल हो जाएगी. So this process of setting down the heavy insoluble impurities present in water उसे हम sedimentation कहते हैं. Decantation बच्चों इसमें क्या होता है? The flow of sedimentation, the clean water of the sand sediment is poured into another container leaving the sand behind. Filtration क्या होता है बच्चों? घर पे while pouring tea we filter it through a strainer. और स्कूल में laboratories students use filter paper to remove insoluble impurities. The clean water it is obtained, the beaker is called filtrate. Okay, here we have sedimentation, then we have filtration process. Here you can see how impurities from water are removing. Now, soluble impurity in water can be removed by boiling it. बच्चों ऐसी impurities जो पानी में मिल चुकी हैं वो boiling करके हम उन्हें निकाल सकते हैं. और बच्चों it can also kill germs. Chemicals जैसे कि क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम है, पर मैग्नेट है, दे आर यूज टू किल द जर्म्स इन द वाटर. इसीलिए बच्चों हम लोग कहते हैं ना फिल्टर वाटर पीजिए या बॉइलिंग वाटर पीजिए, क्योंकि पानी में आजकल बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज आ चुकी हैं, मिल चुकी हैं. सो दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्योरीफाई वाटर. इस मेथड में बच्चों आप जान सकते हो आपको एक बर्तन में पानी रखना है, पानी गर्म हो जाएगा. जर्म प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड बाय बॉइलिंग. देन वी हैव chlorinization. In this method, chlorine is added to water to kill germs. The process of adding chlorine in the water is called chlorinization. Okay, dear learners, so we have completed our chapter. What you have to do, you have to revise this point, the summarizing point from the chapter, and also you have to revise all the tough spelling and all the forms of water and all the formation from which water cycle occurs, condensation, evaporation. So revise the chapter properly and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.